Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. This class all about American literature. So the final preparation के लिए American literature में कौन से क्वेश्चन करने हैं, the question that we need to prepare for the final examination. अब तो यूज ने गाइडेंस दे दी कि एग्जाम्स कंफर्म है होने वाले, तो गाइस इट्स अ राइट टाइम to check and go through by each and every important topic जो हमें इस पेपर को क्रैक करने के लिए प्रिपेयर करना है. This paper, see this paper, M06 that we don't have American literature is not the easy one. Easy thing nahi, we do have lots of work to do. Poetry, yes, we do have plenty of poetry along with the short story, the prose, the novel, and the drama. The bluest eye, सारे के सारे करने कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो यहाँ पे फाइनली हम बात करने वाले आज वो क्वेश्चन करने जो कंफर्म है कि हाँ आने आने. And then we need to know the answers. Answers already ready. मैंने आपको पहले बताया कि इस बार जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उन सब के आंसर मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ. Along with that, almost a bunch of questions, the several other questions with answers वो भी आपको उसमें मिल जाएंगे. For that, you need to WhatsApp me on this number जो आप कर सकते हैं easily. And notes are not free. मैं हमेशा हर क्लास में मेंशन करता हूँ. कई बार मुझे सर आपने वीडियो में नहीं बताया कि नोट्स फ्री नहीं होते. नोट्स फ्री नहीं होते गाइस. हाँ, हेल्प पूरी तरह से फ्री है जो मैं YouTube पे अपलोड करता हूँ. आपको जरूरत नहीं है कि आप नोट्स लें. इज नॉट कंपल्शन फ्रॉम माय साइड, सॉरी, नो कंपल्शन. आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. आप मुझे डाउट्स बोलते हैं, मैं वीडियो लेके आता हूं आप लोगों के लिए. तो यहां से शुरू करते हैं क्लास को. तो प्लीज चेक आउट योर पेन एंड नोटबुक सो दैट यू कैन राइट डाउन ऑल. शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. द वेरी फर्स्ट सर इस बार पेपर में कंफर्म मिलेगा आपको. दैट इज राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द आइडियोलॉजी. राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ Puritanism. So what is Puritanism? ये Puritanism का क्वेश्चन हर बार आता है, कहीं भी घूम फिर के कहीं ना कहीं से आ जाता है, तो इसको प्रिपेयर करना. That's very true. ये फर्स्ट ब्लॉक है आपका. Write a critical note on the ideology of Puritanism reflected in American literature. तो Puritanism कहाँ रिफ्लेक्ट होता है अमेरिकन लिटरेचर में, उसको हाईलाइट करना है. क्या चेंजेस है, किन कॉन्सेप्ट को बताएंगे, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है. Then we need to come to the next part. Discuss the literary genres. ये भी पेरिटेंस से जुड़ा हुआ है. डिस्कस द लिटरेरी जेन्यूर्स ऑफ पेरिटेंस. अब ये पेरिटेंस के लिटरेरी जेन्यूर्स को हमें क्लियर करना है. वी नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरिटेंस. क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्लियर करेंगे, किन चीजों को समझना जरूरी है. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जामिन द नेचर ऑफ रियलिज्म. आई रिपीट, एग्जामिन द नेचर ऑफ रियलिज्म इन द डेप्थ ऑफ अ सेल्समैन. अब रियलिज्म क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसको डेप्थ ऑफ सेल्समैन से कैसे जोड़ूंगा. हाउ वुड आई कनेक्ट द डेप्थ ऑफ सेल्समैन विद द रियलिज्म. तो यहां पे आप प्लॉट को लेके आएंगे, प्लॉट के कॉन्सेप्ट को ऐड ऑन करेंगे, फिर आप बताएंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ इट इज रियली वेरी नियर टू रियलिज्म. एग्जामिन द नेचर ऑफ रियलिज्म इन डेप्थ ऑफ अ सेल्समैन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ व्यू रिफ्लेक्टेड इन द टेस्ट. तो टेस्ट के सर यहां से देखो, मैं आपको हर वो चीज जो पेपर में कंफर्म आने वाली है वो यहां बताने वाला हूं. एग्जांपल ये डेप्थ ऑफ सेल्समैन का क्वेश्चन कंफर्म है पेपर में आएगा गाइस. ये हमें ऑन टिप होना चाहिए. नेक्स्ट कम नेक्स्ट वन. द स्कारलेट लेटर. आई रिपीट, द स्कारलेट लेटर बाय नैथन हॉथॉर्न इज बोथ अ क्रिटिक एंड एन एफर्मेशन ऑफ यूटोपिया. अ क्रिटिक एंड एफर्मेशन ऑफ यूटोपिया. कमेंट. So that is the fourth question. Repeat करता हूँ question. The Scarlet Letter by Nathan Hawthorne is both a critique and an affirmation of utopia. Comment. Come up to question number 5. Here, write an essay on the growth and development. I repeat, this is the most expected question this time. Write an essay on the growth and development of American short story. Growth and development of American short story. Cite instances from the text by William Faulkner and Ernest Hemingway. दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को. राइट एन एसे ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी. साइट इंस्टेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट बाय विलियम फॉकनर एंड अर्नेस्ट हेमिंगवे. सो द फर्स्ट 5. We just work out the 5 questions. अब इन पांचों क्वेश्चन को थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं. प्लीज गाइस चेक कर लेना कि आपने कितने लिखे हैं और कौन से मिस हो गए, तो उनको आप क्लियर कर लेंगे. The first, write a critical note on the ideology of Puritanism reflected in American literature. That is the very first question. Come on to the second one. Discuss the literary genres of Puritans. Third, examine the nature of realism. Examine the nature of realism
in depth of a salesman with respect to the point of view reflected in the test. वो point of view बताना जो reflect करता है test के अंदर. Next, the Scarlet Letter by Matthew Hawthorne is both a critique and an affirmation of utopia. Comment. The next one. Write an essay on the growth of development of American short story. Write an essay on the growth and development of American short story. Cite the instances from the test by William Faulkner and Ernest Hemingway. So these are the first 5 questions that you have been expecting for this paper, MEG 06. Come up to question number 6. I hope आपने यहाँ तक लिख लिए. Discuss the twin themes. Discuss the twin themes of freedom and slavery. I repeat. Discuss the twin themes of freedom and slavery in Huckleberry Finn. इन दोनों themes को आपको बताना है in Huckleberry Finn. Next one. Discuss Hemingway art of storytelling. सर अभी हेमिंगवे को डिस्कस किया था आपने कंपेयर विद द अदर राइटर. और यहाँ पे क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड. डिस्कस हेमिंगवे आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग विद रेफरेंस टू अ क्लीन वेल लाइटेड पैलेस. आई रिपीट द क्वेश्चन. इसको प्लीज क्लियर करेंगे, हमारे लिए जरूरी है जानना. इसको पूरा का पूरा क्लियर करना है. डिस्कस हेमिंगवे आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग विद द रेफरेंस ऑफ अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस. इसको पूरा का पूरा ऑन टिप करना है आपने. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. तो इसको समझ पाएंगे और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी हम कैसे समझेंगे एंड कौन से कॉन्सेप्ट जो क्लियर करने हैं. नेक्स्ट वन. इन ओ'नील द हेरी एप. आई रिपीट द क्वेश्चन. इन ओ'नील द हेरी एप वी कम अक्रॉस मैन स्ट्रगल विद हिज पास्ट एज आल्सो हिमसेल्फ. I repeat the question. In O'Neill, the hairy ape, we come across man's struggle with his past as also himself. तो सर प्लॉट की बात करें, पूरा प्लॉट आएगा, उसके कॉन्सेप्ट को बताएंगे एंड द बेसिक थिंग्स यू नीड टू मेंशन दिस आंसर. Come next question, question number 9. Write a note on imaginary. Write a note on imaginary Emily Dickinson's poetry. तो सर पोइट्री की कलेक्शन बहुत ह्यूज कलेक्शन हमारे पास. डिक्सन है, एडविन रिच है हमारे पास, विडो विटमैन, सारे के सारे डील करने. राइट अ नोट ऑन इमेजिनरी इन एमिली डिक्सन्स पोइट्री. कम नेक्स्ट वन. डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट. हाउ कुड आई फॉरगेट हिम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू मेंडिंग वॉल एंड ब्रिजेस. दोनों को बताना. तो यहाँ पे पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, फिर मेंडिंग वॉल के एनालिसिस को हाईलाइट करूंगा, फिर ब्रिजेस का हाईलाइट मेंशन करूंगा एंड देन आई कैन चेक द बेसिक थीम और द कॉमन थिंग्स इन बिटवीन. तो ये थे फर्स्ट 10 क्वेश्चन 6 to 10. एक बार छोटा फीडबैक दे रहा हूं, प्लीज चेक करेंगे कहीं कुछ छूट तो नहीं गया गाइस. क्वेश्चन नंबर 6. डिस्कस द ट्विन थीम्स ऑफ फ्रीडम एंड स्लैवरी इन हकलबेरी फिन. कम नेक्स्ट वन. 7th. डिस्कस हेमिंगवे शॉर्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग. Discuss Hemingway art of storytelling with reference to a clean, well-lighted place. Come on, 8th one. In O'Neill the hairy ape. In O'Neill the hairy ape, we come across man's struggle with his past as also himself. उसका नाम पूरा बताना है. Then come 9th question. Write a note on imagery in Emily Dickinson's poetry. Write a note on imagery in Emily Dickinson's poetry. And the last question, number 10. Discuss the chief characteristics of Robert Frost's poetry with a special reference to bending wall and bridges. Time to discuss question number 11. So last 4 questions जो हमने अब डिस्कस करना है. तो गाइस अभी तक आपने जो किया ऑन टिप होगा. आई होप. कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट बॉक्स में आएंगे. आई विल कम विद द सॉल्यूशन फॉर यू गाइस. क्वेश्चन नंबर 11. कलर कॉन्शियस. 100% पेपर में. Color consciousness is a constant presence in Toni Morrison's The Bluest Eye. Discuss racism. थीम है इसकी. अगर वो थीम को भी पूरा डिटेल में बता दो ना तो आपको पूरा मिल जाएंगे इस आंसर में. Color consciousness is a constant presence in Toni Morrison's The Bluest Eye. Discuss. Come up to the next question. Question number 12. Comment on some of the shifts in style and essence. I repeat. Comment on some of the shifts in style and substance in American prose written after American Civil War as compared to period before. तो सर ये क्वेश्चन आता है सिविल वॉर से रिलेटेड. क्वेश्चन कंफर्म होता है पेपर में जो हम वो ऑन टिप होना चाहिए. तो यहाँ पे कमेंट ऑन द शिफ्ट्स इन स्टाइल एंड एसेंस सब्सटेंस इन अमेरिकन प्रोज रिटन आफ्टर अमेरिकन सिविल वॉर एज compared to period before. Next one. Write a critical note on the Walt Stevens Sunday Morning.
Sunday morning you must go through by this particular part. ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो बहुत easily clear होती है. Write a critical note on that was famous Sunday morning. इसके एनालिसिस को क्लियर कर लेना है और कुछ नहीं करना. Next one, analyze the rise and development of revolutionary prose. Analyze the rise and development of revolutionary prose in America. So the last four question number 11, 12, 13 and 14, I'm going to give feedback to you guys. तो आप इसको पूरा on tip कर लेंगे. Color consciousness is a constant presence in a Toni Morrison's The Bluest Eye. First. Second, comment on some of the shifts in style and substance in American prose written after American Civil War as compared to period before. Question number 12. Question number 13. Write a critical note on Walt Stevens' Sunday morning. And then come to the last question. Analyze the rise and development of revolutionary prose in America. तो ये है वो टॉपिक्स जो आपको करने हैं. Actually these are the questions. पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं. आपने तैयारी की है तो दैट बेटर पार्ट, नहीं की है तो यू कैन गेट ऑल दिस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. व्हेन यू गोइंग टू गेट द नोट्स तो खाली ये 14 क्वेश्चन नहीं, इनके 10-12 क्वेश्चन और होंगे अलॉन्ग विद द आंसर्स जिनको आप करके पूरी तरह क्रैक कर सकते हो इस पेपर को विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. टिल देन अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना. हियर यू आर हैविंग एवरीथिंग दैट यू एवर नीड फॉर टू क्लियर MEG. For that, you need to like, share, and subscribe. And you can follow me on Insta by the name of Class RAHUL. Bye, guys.